Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I am you. Today is a sunny, beautiful weather. I hope you all are enjoying, but keep yourself warm and be safe. So today, since we have covered most of the dyslexia types, today I will be discussing some of the frequently asked questions by the parents and the teachers. ये क्वेश्चंस मुझे बहुत से लोगों ने पूछे आफ्टर माय दीज वीडियोस, तो मैंने सोचा मैं एक इस पे पूरी वीडियो बना लूँ ताकि आपके क्वेश्चंस एक साथ सारे क्वेश्चंस कवर्ड हों. ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ, व्हाट इज़ डिसलेक्सिया? नाउ डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी या डिफ़िकल्टी है जो कि अफेक्ट करती है आपकी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग में. As I told earlier, and I will be saying it again, it's not a sign of low intelligence. In fact, many dyslexic learners are very creative and bright. It's only that their brains simply process written language differently. उनका जो ब्रेन की आप समझें जो वायरिंग हुई हुई है वो स्लाइटली डिफरेंट हुई हुई है, और वो जो रिटन लैंग्वेज है उसको डिफरेंटली प्रोसेस करते हैं. दूसरा क्वेश्चन कि इसके अर्ली साइंस क्या हैं. नाउ अर्ली साइंस है, नंबर वन, डिफ़िकल्टी रिकग्नाइजिंग लेटर्स. नंबर टू, ट्रबल राइमिंग, राइम नहीं कर सकते वो. रीडिंग उनकी बहुत स्लो होती है. मिक्सिंग अप सिमिलर लुकिंग और सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स. ठीक है. फिर स्पेलिंग्स में इनकन्सिस्टेंसी होती है. अगर आप ये चीज़ें अपने बच्चे में देख रहे हैं, सो you know you can give them early support, and by early intervention you are going to make a huge difference in your son or daughter's academic life. ठीक है. फिर क्वेश्चन किसी ने किया कि इज डिसलेक्सिया कॉज्ड बाय पुअर टीचिंग? एब्सोल्युटली नॉट. Dyslexia is a neurological disorder, and it's not a result of laziness or bad teaching. Students try hard, they just need the right strategies. हाँ, टीचर्स जो हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी सही करके, मतलब राइट स्ट्रैटेजीज के साथ उन बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं. बट इट इज़ नॉट लाइक डिसलेक्सिया इज कॉल्ड बाय पुअर टीचिंग. इट्स नॉट लाइक दैट. फिर किसी ने मुझे से सवाल किया कि कैन डिसलेक्सिया बी क्योर्ड? Unfortunately, there is no cure or for dyslexia, but with the early intervention or the right interventions, the proper word is right interventions, and early as well, especially multisensory and structured teaching, dyslexia learners can read and write very effectively. वो बहुत इफ़ेक्टिवली रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं. अब ये है कि डिसलेक्सिया को डायग्नोज कैसे करना है, कि हाउ इज़ डिसलेक्सिया डायग्नोज्ड. नंबर वन है कि जो क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, ही शी और ही कैन विद द रीडिंग एक्यूरेसी, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, memory, processing speed, early assessment leads to better outcomes. Early assessment, early intervention, and the right kind of intervention. So, ये बहुत ज़रूरी है डिसलेक्सिया के लिए. फिर है कि does dyslexia affect intelligence? No. Dyslexia affects reading, not intelligence. Many dyslexic individuals are innovators, artists, successful professionals. दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से. ठीक है. सो इट्स नॉट लाइक कि डिसलेक्सिया वाले जो बच्चे हैं वो कुछ कर नहीं सकेंगे अपनी लाइफ में. इट्स नॉट लाइक दैट. बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं. व्हाट टीचिंग मेथड्स वर्क बेस्ट? द मोस्ट effective approaches include multisensory learning, systemic phonics, Orton Gillingham techniques and visual auditory kinesthetic methods. ये दोनों जो है Orton Gillingham techniques
एंड विजुअल प्लस ऑडिटरी प्लस काइनेस्थेटिक मेथड्स, ये मैं आपको एंड में अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगी व्हाट आर दीज टू टीचिंग मेथड्स. और इसको टीचर्स बहुत गौर से सुने बिकॉज दीज मेथड्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. डज डिसलेक्सिया इम्पैक्ट मैथ? समटाइम्स. Now, dyslexia or dyscalculia में फ़र्क है. Dyscalculia is a disability of mathematics, numbers. So, students may struggle with number names, sequencing and word problems. उसमें इनको प्रॉब्लम आती है. जैसे मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें they are unable to sometimes, read properly. Then another question was asked, is dyslexia hereditary? Yes, it often runs in families. Then the teachers asked that how can we help, how can we support dyslexic learners? So number one is you have to give them extra time. Number two, break tasks into smaller steps. छोटे steps में अगर कोई for example अगर let's say कि पाक स्टडीज़ का कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर है, तो उसको आपने पाँच पाँच के या फाइव फाइव या सिक्स सिक्स बुलेट पॉइंट्स में उनको करके चंक्स में याद कराना है. ओके. देन यूज़ ऑडियो बुक्स एंड टेक्नोलॉजी, visual aids, and you should give class notes in advance. Whatever you're going to teach in the upcoming classes, you can give those notes in advance to all the students who have dyslexia or any other learning disability. के साथ भी यही करना चाहिए. Does dyslexia happen in all languages? ये बहुत एक क्वेश्चन किसी उर्दू टीचर ने पूछा. और yes, dyslexia appears in every language including Urdu. Those symptoms vary करते हैं. फिर there was another question, can adults have dyslexia? Yes, many adults are undiagnosed. With support, they can still build strong reading and writing skills. Unfortunately, countries like Pakistan and जितने भी third world countries हैं, उनमें especially in the rural areas, there is no such thing as a child being diagnosed early for any learning disability. So वो क्या होता है कि हमारे गांव में या तो ये कह दिया जाता है कि इस पे कोई असर है, या ये कह दिया जाता है कि ये तो बहुत नालायक है, ये पढ़ ही नहीं सकता, तो उसको स्कूल से निकाल लेते हैं. But through my research, what I researched and the interviews I've done with many of the students and the parents, including the जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, जो रूरल एरियाज़ के हैं, उससे यही पता चला कि ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो जिस वजह से जो निकाले जाते हैं उनमें कोई ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है. So you need to, we all need to in fact join hands and try to um, create awareness, ठीक है, about these learning disabilities so that no child should be left behind. Okay, another question is, do dyslexic students need special schools? No, I don't think so. And abhi to there's a lot of awareness being done throughout the world about inclusion and inclusive schools. So all these students should be in the mainstream schools. It's only that yes, I do agree, being a teacher myself, and I can understand that all the teachers are not fully equipped, or they lack resources about how to teach these students. So उनके लिए मेन स्ट्रीम स्कूल्स में प्रॉपर अकोमोडेशंस हों तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं एकेडमिकली. देन कम्स व्हाट एग्ज़ाम अकोमोडेशंस हेल्प. सो जैसे मैंने पहले भी बताया है, एक्स्ट्रा टाइम, the use of computers, spelling leniency, a quiet testing room, reader or an assistant who can help read or write. ठीक है. Are dyslexic learners creative? Yes, many are exceptionally creative and strong problem solvers. They often excel in arts, design, entrepreneurships, and innovation thinking.
These are some of the questions that were asked frequently, and I hope you found this video helpful. As I said that I will be talking about the methods, the techniques, which are Orton Gillingham techniques, and the visual plus auditory plus kinesthetic methods. So let's first do what are Orton Gillingham techniques quickly. Orton Gillingham is a scientifically proven, structured approach to teaching reading. Okay, especially effective for children with dyslexia. It is based on the ideas the students learn best when instruction is number one, multisensory. Students use eyes, that is seeing, and they use ears, that is hearing, and movement, kinesthetic, together while learning sounds and words. Number two, teaching should be structured. Lessons should follow a clear sequence from simple to complex, step by step. Number three, sequential. You teach one concept at a time and ensure mastery before moving on. ये नहीं करना कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके फ़ौरन बाद दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, नहीं, ऐसे बच्चे नहीं याद कर सकते. सो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, उसके बाद आपने उनको रिवाइज कराना है उसको, जब तक यू मेक श्योर कि वो बच्चे ने याद कर लिया है या समझ गया है. देन कम्स एक्सप्लिसिट. नथिंग इज assumed. Every skill, sounds, blends, patterns, is taught clearly and directly. Then phonics based. Students learn the relationship between letters and sounds in a systematic way. ठीक है. तो अब हम एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी दे देती हूँ. एग्जांपल्स ऑफ ऑर्टन गिलिंगम टेक्निक्स ये है. नंबर वन, सैंड और टेक्सचर्ड राइटिंग है. स्टूडेंट्स राइट लेटर्स ऑन वर्ड्स और वर्ड्स इन सैंड. वो सैंड मिल दे दें उन्हें, राइस दे दें, टेक्सचर्ड सरफेस हो, ताकि वो अपनी मल्टी सेंसरी, अपने टच से वो उसे समझ सकें. से, ट्रेस, राइट, चेक. सो से द साउंड क्या है? से, trace, write, check. So number one, you have to say the sound. Number two, trace the letter with fingers. Write it on paper. Check for accuracy. पहले उसने साउंड को बोला, फिर उसको ट्रेस किया, फिर उसको अपने फिंगर से ट्रेस किया, फिर उसको write it on paper and then check for accuracy. Then टीचर शोज ब्लेंडिंग ड्रिल्स जो होती है ना, वो फोनिक्स से होती है. म एट. सो स्टूडेंट्स ब्लेंड टू रीड मैट. Then read and green words is another technique. Green words are phonetic words you can sound out like cat, ship, run. Red words, they are called the irregular. So irregular words में you have to spell out the words. देखिए, was, 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 said, said, who. Then comes another technique, dictation practice. Students hear a sound or word, repeat it and write it using multi-sensory cues. Multi-sensory cues से उन्होंने practice करनी है. Now, why is this OG effective? ये इसलिए effective है because it strengthens the brain's ability to connect sounds, letters and meanings, the exact area where dyslexic learners struggle. फिर हमारे पास है जो दूसरी टेक्निक है कि व्हाट आर विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक मेथड्स. विजुअल इज सीइंग. ठीक है, एग्जांपल्स हैं, आपने फ्लैश कार्ड्स दिखाए, कलर कोडिंग लेटर्स हैं, विजुअल स्पेलिंग मैप्स हैं, चार्ट्स एंड डायग्राम्स हैं, फिर हाईलाइटिंग पैटर्न्स इन वर्ड्स. ठीक है. ऑडिटरी मीन्स हेयरिंग, सो सेइंग साउंड्स आउट लाउड, क्लैप फॉर सिलेबल्स. फिर एको रीडिंग होती है. ठीक है. लिसनिंग टू फोनिक साउंड सॉन्ग्स, वो भी बहुत ज़रूरी है. Sound drills using letter cards. Then come kinesthetic, that is the movement. Now this engages the body in learning, great for dyslexic or ADHD learners. Examples are writing letters in the air, jumping to syllables, using clay to form letters, tracing letters with fingers, and moving tiles to build words.
Now, how this OG and VAK connect? Orton Gillingham uses VAK methods inside its teaching. For example, when teaching the letter B, visually जो है student looks at the letter. Auditory है कि वो सुनेगा sound B को. Kinesthetic है it traces B in sand or writes it with finger. Now cognitive है reads words like bat, big, tub. This creates ये क्या करता है? It creates stronger neural pathways and ये help करता है dyslexic बच्चों को to remember better. So this was all for today's lesson. I hope you found this video effective, and I hope you will follow the strategies that are being told in this video, especially by the teachers and the parents as well. They can do it at home. Thank you so much. If you like this video, please do like it, subscribe, share करें अपने friends के साथ, अपने school के fellows के साथ. And inshallah, next time we will meet next Tuesday again with another learning disability or difficulty, that is ADHD. उसको हम discuss करेंगे and see you. Thank you so much.